सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल साइ स्टडी क्लासेस। तो आज आम छुआ कौन पढ़िबा ना आम हिस्ट्री रो टॉप 20 क्वेश्चन सेगमेंट रो सेट 7 आम एथरे जानिबा ब्रिटिश इंडिया रो जो तुमर मॉडर्न हिस्ट्री सेगमेंट रे रहउची ब्रिटिश इंडिया जो तुमर 2024 जो माने बीएड एग्जामिनेशन सिटी एग्जामिनेशन देबे सेतरे जो हिस्ट्री रो मेन पार्ट रहउची ताहारी ऊपर आमे आज डिस्कशन करिबा। ठीक अछि एवं कोन टॉपिक ना तुमर ब्रिटिश इंडिया रो आउ किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आमे डिस्कशन करिबा। ठीक अछि एवं एथिरे आमे देखिबा जे कोन कोन सब फैक्ट रहउची कोन कोन सब थ्योरी रहउची ताको आमे भला भाबरे आलोचना करिबा। ता सहित तुम मानकर जो 2024 रे बीएड सिटी एवं ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी एवरी एग्जामिनेशन रे जदि हिस्ट्री सेगमेंट रे क्वेश्चन आछि ताले तुम माने ए क्लास को देखि पारियो। एवं जदि हम तुम मन को ए वीडियो टिके भी भल लागि थाए ताले तुम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एवं बहु मात्रा रे शेयर करो। ता सहित हम टेलीग्राम हैंडल रे तुम माने जॉइन हे पारिबो एवं एटी स्कैन करिके डायरेक्टली जाई कि तुमे हमो कोन यूट्यूब चैनल रे जाई कि पहुंची पारिबो। ठीक अछि तो देखो छुआ आज रो प्रथम क्वेश्चन कोन रहउची। तो the United East India Company refers to the company in India formed by Portuguese, Dutch, French, British। तार कहिबार अर्थ क्वेश्चन तुमको कौन पचारछि जे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी काहाकू देखिकी केउ माने प्रथमे जाइतिले सेमान को देखिकी एमाने रेफर कले जे आमे इंडिया रे गोटे कंपनी तयारी करिबा बा इंडिया रे हमर व्यापार स्टार्ट करिबा। ठीक अछि के हबो छुआ डच माने एवं ये चार जन जाक हला कोन ना इंडिया आछंती। ए चार जन जाक हला कोन ना इंडिया आछंती मन रखियो। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी डच वेरेनाइज ओस्ट इंडाइज एटा से किछ मन रखिया दरकार नै रेफर्ड टू द बाय द ब्रिटिश एज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड इन द चार्टर्ड कंपनी in 1602 when the Dutch government granted at a 21-year monopoly on the Dutch spice trade। माने जो मसला मसला ट्रेडिंग पाई डच केते वर्ष पाई एग्रीमेंट करथला 21 ईयर पाई छाड़ो। द न्यू proletariat classes which emerged in India on account of the British economic policy माने consisted of the new pro proletariat classes which emerged in India on the account of British economy policy consist of moneylender, landlords, traders, all of above। किए होबो छ अरे ऑल ऑफ अबव देखो माने जतले ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जत एस्टाब्लिशमेंट है एवं ताकू तार व्यापार बढ़ेगा लगे तो लोक सब कौन ब्रिटिश रु आनिबो कि तो एबे से कौन काम कला ना इंडिया लोक माननकु काम रखिया लगिला सेथिपई किछि मनी लैंडर लैंडलॉर्ड्स एंड ट्रेडर्स मानकु निज पार्टनर कला एवं से माने हैला कौन हेले ना जो तार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को तार अकाउंट सेक्शन को ब्रिटिश मानकर संभालिया को लगिले सेथिपई द न्यू प्रोलेटरेट क्लासेस व्हिच emerged in India on account of the British economic policy consist of all the above landlords मान ही ताको संभालिले। तापर देखो at which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughal in 1651। At which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and build a factory by the Mughal in 1651। कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बुर्दवान बुडवान बुडवान कोउटा हबो छुआ देखो बेंगल रो प्रथमे केउ स्थान रे से माने कोन कले ना 1651 रो को स्थान रे से माने निजरो कंपनी स्टार्ट करिया पई परमिशन नेथिले बा कंपनी स्टार्ट करथिले कासिम बाजार। ठीक अछि कासिम बाजार बा कासिम बाजार। ठीक अछि कासिम बाजार मन रखियो कासिम बाजार। तापर देखो as per the August offer the British objective of India was dominion status, Puma Swaraj, responsible government, provincial authority। से कहूची अगस्त ऑफर रो ऑब्जेक्ट कौन थिला जो अगस्त दान नथिला कि अगस्त दान छुआ केबे आस्थिला किए कहि परियो अगस्त दान रो केबे आस्थिला अगस्त ऑफर केबे आस्थिला बा अगस्त ऑफर रो मेन मोटो कौन थिला ना डोमिनियन स्टेटस सेपरेट स्टेटस हमको दिया जिवो हमको स्वतंत्रता दिया जिवो स्वतंत्रतार प्रथम पाद बा प्रथम कदम थिला कोन ना डोमिनियन स्टेटस एटा थिला प्रथम मांग जा कुआ जाय। द अगस्त ऑफर वाज प्रपोजल मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन
1940 promising the expansion of the executive council of the viceroy माने viceroy रे executive council को बड़ करा जीवो सेतरे किछि इंडियन मान को रखा जीवो more Indian सेतरे किछि अधिक इंडियन मान को रखा जीवो to establishment the advisory war council giving the full weight minority opinion and the recognition of Indians right to frame their own constitute after the end of the war माने से कोन कहला ना after the end of the war बास द्वितीय विश्व युद्ध सरिया से समय पीरियड टा कोन जा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 रु 1945 पर्यंत द्वितीय विश्व युद्ध चलथिला तो एवं एई टाइम पीरियड भितरे 1940 रो डिसाइड करा होची ना अगस्त ऑफर रे जो वाइसराय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपांड करा जीवो सेतरे किछि इंडियन मान को भाग दिया जीवो जेथिरे से माने हला कोन ना फ्रेम को आसी परिबे निजरो मेजॉरिटी रखि परिबे निजरो ओपिनियन को रखि परिबे जहां भी से माने चाहुचंदी ताकू डेवलप करि परिबे बस तांकू कोन कहउतला ना तुमे हमकु सपोर्ट करो वार रे हमकु सपोर्ट करो द कांग्रेस रिजेक्ट द अगस्त ऑफर नेहरू सेड डोमिनेंट स्टेटस कांसेप्ट डेड एज ए डोर नेल माने जदी आमे डोमिनेंट स्टेटस बा स्वतंत्र हमकु पाहिया जदी आमे नौचे ताहले सेटा हला कह जाय जे मृत्युर प्रथम द्वार बा मृत्यु मुख को हमकु ठेली दिया होची गांधी जी सेड दैट द डिक्लेरेशन हैड विडनेड द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूलर ठीक है छाड़ो देखो who had while fasting in the prison writing to the British governor the individual must die so that the nation may live today I must die so that the India may win freedom and glory माने एटा से एक्चुअली उक्तिटा कहितले जदी इंडिविजुअल मस्ट डाई जदी जणे जणे लेखा मरुचंदी ताने नेशन में लाइव बट मु जदी मरुची ताले भारत निश्चित मात्र स्वाधीन बा ग्लोरी पाइबो जतिन दास लाला लजपत राय एमके गांधी एससी बोस who had while fasting in the prison से होजी फास्टिंग करतले उपवास रहितले ठीक अछि written to the British government the individual must die so that the nation may live today I must die so that India may win and the glory ठीक अछि किए हबो छुआ किए हबो जतिन दास ठीक अछि Jatin Das. Jatin Das, while the fasting in the prison, written to the British governor, the individual must die so that the nation may live. Today I must die so that the India may win and glory. ठीक है जी. During the period of the which Governor General Viceroy was the Indian Civil Service introduced. Okay, Indian Civil Service को किए introduce करथिले? Who? अरे कॉर्नवालिस केते थर कहै छी कॉर्नवालिस लॉर्ड लॉर्ड कर्न लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक अछि कॉर्नवालिस Cornwallis realized that in the order to consolidate the British rule in India, it was very important to organize the civil service. Civil servant was started by the Lord Cornwallis, hence he is called the father of civil services. Father of civil services कहा कुआ जाए? Father of civil service माने IAS ठीक है सर्विस कहा कुआ जाए ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ठीक है जी मन रखियो who said that he had not become his majesty first minister to preside over the liquidation of British empire Attlee Churchill Disraeli Lord George किए हबो छुआ Winston Churchill okay Winston Churchill कहथिले जे he did not become his majesty first minister to preside over the liquidation of the British empire ठीक अछि या माने छ हम तुमको बुझाई दउची जे से कहथिले कोन he is not become his majesty first minister to preside over his liquidation of British empire माने कोन ना ब्रिटिश एम्पायर भितरे आमे कोनसी प्रकार द्वंद्वता बा कोनसी प्रकार माने कोन ना एकता ठीक अछि देखियो को पाइबो नाही आमे सब बेले चेष्टा करिया जे ब्रिटिश एम्पायर इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट एम्पायर इन द वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल ओके वर्ल्ड रे ब्रिटिश एम्पायर गोटे जेमिति भलो एम्पायर भाबे रहइबो बा बेस्ट एम्पायर रहइबो जतले जे 1939 टू 1945 वॉर हेतला से सेगमेंट रे 1942 पर्यंत इंग्लैंड बा ब्रिटिश सत पर्यंत हारी हारी आस्तला बट वन एंड ओनली मैन द विंस्टन चर्चिल made this possible to win in the World War II. Okay, World War II से निज
देश को निज लोक मान को निज जाति को पूरा स्ट्रांग करी रखिले ओके नेक्स्ट देखो Churchill said that the charter did not apply to India. He did not become His Majesty First Minister to preside over the charter. While of the following authorized the British government to imprison any person without trial and conviction in the court of law. Rowlatt Act 1919 এটা হবো কোইটা কি কই পারিব কি মানে সে কইলা যে ব্রিটিশ গভর্নমেंट কোন করি পারিব না কাহাকু বিনা পଚାରି কি কাহাকু বিନା কହି ବି तुमମାନଙ୍କୁ लो बा कोर्ट को नहीं पारिबो बा तुमମାନଙ୍କୁ कौनसी थाना रे बा कौनसी कारागार रे बंदी करी रखा जाय पारिबो बिना कारण रे भी राउलाट एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1909 1919 कोउटा रे हितला अरे राउलाट एक्ट रे हितला ठीक अछि राउलाट एक्ट 1919 रे एई भले डिसीजन नि आइतला जे तुमମାନଙ୍କୁ पाखरु काहरी पाखरु कोनोसी परमिशन निया जिवो नाही एवं तुमମାନଙ୍କୁ कारागार रे बंदी कर दिया जिवो ठीक अछि कोनोसी प्रकार तुमମାନଙ୍କୁ कोनोसी ऑथराइज करा जाय परिबो नाही बस तुमମାନकर जदी भूल अछि बा तुम माने किछि भी करता तुमको कारागार रे बंदी कर दिया जिवो जा फलले जो सैफुद्दीन किचलू एमाने समस्त कोन करथिले ना विद्रोह करथिले एवं एमानकु हला कोन कराइला गिरफ्तार कराइला जा फल रे से माने कोन करचंती एटा फेब्रुअरी रे राउलाट एक्ट आछि फेब्रुअरी रे जा फल रे कोन एप्रिल रे हला कोन होजी ना जालियानबाग हत्याकांड होजी ओके तो तुममान को पई क्वेश्चन को हो जलियानबाग हत्याकांड केबे हितला जलियानबाग हत्याकांड केबे हितला As per the Rowlatt Act, the government had the power to arrest any person without showing any reason. कहिथिन ना तुमको सही कथा कहिछि जे गवर्नमेंट केउनोसी पर्सन को अरेस्ट करि परिबो ना बिना रीजन रे that act were treated the civil liabilities later the act became the reason to occur the Jallianwala हत्याकांड ठीक अछि tragedy the 7 year war 1756 to 63 resulted in the defeat of the Dash forces क्यों फोर्स हारी इतला छुआ अरे फ्रेंच माने हारी इतले ब्रिटिशर्स माने बहुत ही चालाकी से इटा को डिफेंड कले जाफले ब्रिटिशर्स माने जीती होइचंती पेरिस चुक्ति होउची बट किए हारी होउची फ्रेंच हारी होउची ओके in the 1956 the British formally declared the war against the French and additionally Spanish attempt at the French in the Americas had failed and French also suffered defeat against the British force in India the 7 year माने सेमान से समय कोन करथिले ना देखो ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଓଡିଆରେ କେମିତିଆ ଷ୍ଟୋରିଟା ବୁଝେଇ ଦଉଛି ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ କହିନି ଯାହା ଫଳରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ରେ ପ୍ୟାରିସ 1763 ରେ ପ୍ୟାରିସ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା କଣ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଦେଖ फ्रेंच माने इंडिया रे भी थिले फ्रेंच माने तांकर सेठी भी युद्ध लागुतले ठीक अछि का सहित ना एठी भी ब्रिटिशर्स साथरे लागुतले एठी ब्रिटिशर्स कहले जे एमिति एक तरफा बा एमिति युद्ध हेले आमे जीति पाइबा नाही गोटे काम करिबा जे इंडिया रे भी वॉर क्रिएट करनवा एवं फ्रेंच रे भी वॉर क्रिएट करनवा देले फ्रेंच जो आर्मी थिला से डिवाइड हे जिवो किछि एठी भी रहिबो किछि एठी भी रहिबो जा फले सेमान को दी भाग कर देले तांको हरिया पय जदी एकला जदी एमाने मिसई की जदी हरेइबे ताले एमाने कोन एमान को हरिया पय बहुत ही सुविधा हबो बट जदी आको डिवाइड करे दिया जाए डिवाइडेशन कर दिया जाए ताले ये इजीली हारि जिवो ठीक अछि के फ्रेंच माने तो सेति से मान को डिवाइड कर देले किछि लोगन को इंडिया रे लढिले तांका साथ रे किछि लोगन को फ्रेंच रे लढिले तो सेति ब्रिटिशर्स माने एते चालाक हेतु से माने हला डोमिनेट करि परचंती एते वर्ष धरि की इंडिया रे हो किबा वर्ल्ड रे आउ किछि कंट्री रे हो India became independent during the viceroyalty of William Bentinck, Wellesley, Wavell, Mountbatten. कोउटा हा बच्चा viceroyalty of Mountbatten. Mountbatten को समय रे स्वतंत्र भारत रो प्रथम होची फ्रेंच वाइसराय किए थिले बा फ्रेंच कोची माने ब्रिटिश गवर्नर किए थिले ना माउंटबेटन एवं तापरे किए हेले ना राजगोपालचारी सी राजगोपालचारी Okay. Like Lord Mountbatten, last Viceroy of the India, Lord Mountbatten served the last Viceroy of India 12 February 1947 to 15th August 1947 and he is the first Governor General of Free India. तुमको जो कथड़ा कहि देली 15th August 1947 to 21 June 1948. During his tenure, India got independence and the formed two dominion of the India and Pakistan. India and Pakistan दी भाग रे विभक्त होई The company lost all the administrative power. All the administrative power केबे होजेला by the Government of India Act 1858 बा ब्रिटिश क्राउन रो ब्रिटिश रानी क्राउन एलिजाबेथ एलिजा
बेथ को रानी विक्टोरिया सॉरी विक्टोरिया 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 रो प्रोक्लामिनेशन द्वारा प्रोक्लामिनेशन गोटे दस्तावेज आसला ठीक है प्रोक्लामिनेशन ओके गोटे दस्तावेज आसला जहाँ फल से हारीगले British Parliament brought the Government of India Act 1858, which made by following changes transfer the power from the East India Company to British Crown. A member of British Parliament was made the Secretary of State in India to exercise excise power on the behalf of the Crown and was responsible to the British Parliament. The Governor General for India was provided with the Executive Council, whose decision was he was empowered to the override. ठीक है जी the momentous decision to transfer the capital of from Kolkata to Delhi, the annual the partition of Bengal and the abolish India indenturary labor were taken during the viceroy of Lord कहाँ का समय रे छुआ कोलकाता रू दिल्ली को ट्रांसफर कला गला पार्टीशन ऑफ बेंगल को करा गला एवं हेला कोन ना एबोलिश ऑफ इंडिया इंडेक्चुरल लेबर ठीक अछि किए हबो कहाँ का समय रे छुआ अरे लॉर्ड हार्डिंग के समय रे ठीक अछि लॉर्ड हार्डिंग एट द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग वाज ब्रिटिश गवर्नर टू ब्रिटिश हेल्ड टेरिटरी टू ऑन द इंडिया ही वाज द वन हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखियो एवं एटा छुआ केबीसी रो क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति रो एटा क्वेश्चन आस्तिला ठीक अछि क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति रे क्वेश्चन आस्तिला Till the end of the 17th century, the growth of executive and legislative power of the East India Company depend on governor, governor general, parliament, crown in the 17th century. क्या बरे गवर्नर गवर्नर जनरल पार्लियामेंट एंड क्राउन किए हो छुआ अरे 17th सेंचुरी रे क्राउन हाथ को पळि आस्तिला जाननो कि एटा क्राउन हाथ को टिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी शेष होबा माने शेष होबा पर्यंत कोन ना द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिपेंडेड ऑन क्राउन ठीक अछि In November 1781, Sir Ayar Kuti defeated Dash at Pratonova. Hyder Ali, माने मरथंडा वर्मा ब्रिटिश टीपू सुल्तान कोनटा बचवा हैदर अली ठीक अछि हैदर अली हो इन नवंबर 1781 द आयर कुटी डिफीटेड हैदर अली एट द प्रोटोनोवा ठीक अछि The Battle of Protonova was fought on the 1 July 1781 between the forces of Kingdom of Mysore, okay, and British East India Company in the place called Protonova is known as Pranjipatai on the Indian subcontinent during the Second Anglo-Mysore War. The British force numbering more than 8,000 under the command of the Sir Ayar Kuti defeated a force estimated at 40,000 under the command of Hyder Ali. The English East India Company achieved a major victory over the Portuguese in Battle of Dash in 1612. Buxar, Palasi, Swally. Buxar, Palasi, Swally. क्या होगा? The East India Company achieved a major victory over the Portuguese in Battle of Dash 1612. कोणता हवा छुआ? Swally war. Okay, Swally the East India Company achieved the major victory over the Portuguese. Portuguese मान को बखरू गुटे मेजर विक्ट्री जीति थिले. ठीक अछि केते 1612 ख्रीष्टाब्द रे माने जो समय रे तांको ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिशमेंट होतला कोठी ना इंडिया रे होतला के ना स्वाली ठीक अछि the naval battle of Swally also known as the battle of Swabhali took place on 29 and 30 November and 1612 of the coast of Swali Angeli stated of the Swally
at the village of near the Surat city now in Gujarat India but Gujarat India रे अछि was a victory of four East one English East India Company galleons over the four Portuguese galleons and 26 brag बा brag माने हला कोन ना rowing vessel with no armaments ओके छाडो एटा किछि नै କିଛି ମନେ ରଖନି ଖାଲି ମନେ ରଖ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ମେଜର ଭିକ୍ଟରି ତାଙ୍କ କଣ ଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହଉଥିଲା ନା ସ୍ୱାଲି ୱାର ଓକେ ସ୍ୱାଲି ୱାର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ ଏଜ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ ୱାଜ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନର୍ଜୀ ସିଆର ଦାସ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର କିଏ ହବ ଛୁଆ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଦ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଓକେ नेक्स्ट देखो द फर्स्ट इंडिया टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज किए हो द फर्स्ट इंडिया टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू ब्रिटिश हाउस कॉमन वाज अरे उमेश चंद्र बैनर्जी ही ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ INC okay he is the also the first president of INC the first Bengali drama written to highlight the brutality of British indigo planter was कोउटा the first Bengali drama written the highlight of brutality of British मान को brutality मान को अत्याचार ऊपर कहिथिला indigo planters was राष्ट्र गॉफ्टर नील दर्पण सोमी प्रकाश कोउटा हवता नील दर्पण ओके नील दर्पण विषय बहुत ही सुनिथिबा नील दर्पण द इंडिगो मिरर इज द बेंगली प्ले रिटन द दीनबंधु मैत्र in 1858 to 1859 the play was published of the Dhaka in 1860 under the pseudonym of the author the play was essential to Neil Vadodara better known as the Indigo Revolt of February March 1859 in Bengal when the farmer refused to sow indigo in the field of protest against the exploitative farming of the British Raj रे जो इंडिगो चाष पई समाने परमिशन बा ता ऊपर खोजना अधिका नउथला बेले केमिति बंगाली बा बेंगल रो जो फार्मर माने ताकू प्रोटेस्ट करथिले बा ताकू माने कोन करथिले ना अपोज करथिले ठीक अछि The Treaty of Lahore was signed between the Sikh and the British in the year of Treaty of Lahore केबे साइन कराइतला 1846 okay the Treaty of Lahore was signed on 9 March 1846 after the First Sikh War. After the defeat of the Sikh as the Battle of Sobaron, the British were able to march into Lahore without any further battle. After the British reached the city of Lahore, the treaty signed. Okay. The privileges of free trade granted to the East India Company were confirmed in 1717 by Emperor Bahadur Shah, Farooq Shire, Muhammad Shah, Aurangzeb. Farooq Shire, ठीक है जी Farooq Shire हबो he is the East India Company were confirmed 1717 रे फारूक शेयर सेतरे से माने कोन करथले ना डील करथले बा ट्रेड करिया पई बा अधिक से माने फ्री ट्रेडिंग करिया पई फारूक शेयर सेतरो डील करथिले बा तांको सहित चुक्तिनामा आइथिला जा फल से गुटे कोंती दस्तावेज ओके गुटे दरखास्तनामा इशू करथिले जे तुममान को बा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिशर्स मानकू ऑल इंडिया सबु स्थान रे बिना हला परमिशन रे तांको फ्री ट्रेडिंग करिया को दिया जिवो ठीक अछि एटा से माने परमिट करथिले जा फल तारो किछि फैक्ट दस्तावेज को बाहर करिकी विभिन्न जगह रे विभिन्न स्थान रे इलीगली जिंस को भी ट्रांसफर करा गला ठीक अछि केउ माने कले ना ईस्ट इंडिया कंपनी माने कले ओके एवं या पई यार सब डेडिकेटेड थ्योरी सब हमर पेड बैच बा पेड क्लासेस रे पढा होची तो जो माने भी जॉइन करिया पई चाहउछन सेठी जॉइन करि परिबे तो बस आजिर क्लास थिला एतिकी थैंक यू जय जगन्नाथ जय हिंद समस्त आम चैनल को शेयर करो वीडियो को लाइक करो फॉलो करो कमेंट टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन एंड मेनली सब्सक्राइब ओके सब्सक्राइब करो वीडियो को टिके भल लगता है थम्स अप बटन दे दियो भलो भाबरे चिपी की लाइक कर दियो ओके थैंक यू जय जगन्नाथ जय हिंद बस एमती पढु थाओ आगु को बढ़ु थाओ